अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 9 पढ़ना है, पेज नंबर 20, चैप्टर नंबर 9 ऑफ मिस्टर चिप्स. First, I will read this page and I will explain about this chapter. Chips changed his more commodious apartment in schoolhouse for his old original bachelor quarter. कोमोडियस अपार्टमेंट मींस कहते हैं स्पेशियस रूमी, मतलब जिसमें थोड़ी सी जगह हो, गुंजाइश हो, ठीक है. फॉर इज़ ओल्ड ओरिजिनल बैचलर क्वार्टर, मतलब उसने अपना जो क्वार्टर था ना उसको दोबारा बैचलर की तरह कर लिया था, जिस तरह क्योंकि उसकी वाइफ और उसकी न्यू बॉर्न बेबी की डेथ हो चुकी थी, वो अकेला ही था. ही थॉट एट फर्स्ट ही वुड गिव अप हिज हाउस मास्टरशिप बट द हेड परसुएडेड हिम अदरवाइज. फर्स्ट शुरू में उसने सोचा कि वो छोड़ देगा अपनी मास्टरशिप, लेकिन जो उसका हेड था ना, जो ब्रुकफील्ड का, उसने उसको कन्विंस किया कि नहीं, आप जारी रखें अपना काम ना, ठीक है. एंड लेटर ही वाज ग्लैड, और बाद में वो खुश भी रहा था इस ड्यूटी से. द वर्क गेव हिम समथिंग टू डू, फिल्ड अप एन एम्प्टीनेस इन हिज माइंड एंड हार्ट. और जो उसके दिमाग में, जो उसके हार्ट में जो एम्प्टीनेस थी, वो इस काम की वजह से वो क्या कहते हैं दूर होती जा रही थी, क्योंकि उसका ध्यान दूसरी तरफ जा रहा था. He was different, everyone noticed it, and now he has become different, or everyone is noticing about his behavior. Just as marriage had added something, so did bereavement. जिस तरह उसकी मैरिज से कुछ उसमें डिफरेंट उसके बिहेवियर्स उसके चेंज हुए थे, इसी तरह जो बेरीवमेंट कहते हैं उसका लॉस था, जो उसकी वाइफ की डेथ या उसके बेबी की डेथ की वजह, तो उसमें और ज़्यादा चेंजेस आ गई थी. After the first stupor of grief, he became suddenly the kind of man whom boys at any rate unhesitatingly classed as old. Or now he has become a old man, and every student unhesitatingly called him an old man. It was not that he was less active, he could still knock up a half century on the cricket field, nor was it that he had lost any interest or keenness in his work. इट वॉजंट बिकॉज के वो क्या कहते हैं बहुत क्या कहते हैं लेस एक्टिव हो गए थे, नहीं, अभी वो बहुत एक्टिव थे. और अभी वो कहते हैं कि वो इस तरह के थे कि वो कि क्रिकेट फील्ड में आए, एक क्रिकेट मैच खेलने हैं, तो अभी वो हाफ सेंचुरी इजीली बना सकते हैं विद पूरे इंटरेस्ट, और जिस तरह वो अपने काम पे ध्यान देते थे ना, बिल्कुल वैसे ही था. लेकिन after the death of his wife and his child, he become less interested in his work. Actually, too, his hair had been graying for years, yet now, for the first time, people seemed to notice it. And now his hair had become graying. Now that's a sign of old age. The gray hair of Mr. Chips. He was 50 now. Now he was in his 50. Once, after some energetic fives, during which he had played as well as many a fellow half his age, he overheard a voice saying, "Not half bad for an old chap like him." And one of the student of Mr. Chips made fun of him that now he has become an old chap. Basically, the student called him old. Chips, when he was over 80, used to recount that incident with many chuckles. And when he went to his age of 80 years, then he recounted that incident. The boy said him about old chap. Basically, he basically made fun of that boy. That once when I was in 50 years of age, the boy called me an old an old an old man, but now I am over 80 and still I am very active. बेसिकली वो ये कहना चाहते हैं कि हम अब 80 ईयर्स का भी हो गए, लेकिन फिर भी मैं अब बहुत एक्टिव हूँ. ओल्ड एट 50. It was Naylor who said it, and it was Naylor, the student of Mr. Chief, who said about Mr. Chief, an old man. And Naylor can't be far short of 50 himself by now. And now Naylor can't be far short of 50 himself by now. मिसिर्फ कहते हैं कि अब वो चूँकि 80 ईयर्स के हो चुके हैं, और नेलर भी क्या कहते हैं, उनका स्टूडेंट था जिसने उस टाइम मुझे 50 ईयर्स में एज में बूढ़ा कहा था, ओल्ड एज कहा था, तो अब वो भी क्या कहते हैं 50s में पहुंच चुका होगा. आई वंडर इफ़ ही स्टिल थिंक्स दैट 50s इज़ सच एन एज. अब वो कहते हैं मेरा ख्याल है कि अब अभी भी कोई ऐसे ही सोचता है कि 50 ईयर्स एज में वो ऐसी बंदा हो जाता है.
Last I heard of him, he was lawyering, and lawyers live long. Look at Halsbury, Chancellor at 82 and died at 99. And now Mr. Gibbs gives an example of one of his old student, or maybe his colleague, maybe the person he personally knew about, named Mr. Halsbury, who was a chancellor and also a lawyer, who lived about 99 years of age. That's a very old age. And that's the fact about the age of lawyers, that lawyers live long. There is an age for you, too old at 50. Why fellows like that are too young at 50? I was myself a mere infant. Mr. Chips, when he was at his 50 years of age, he called himself a mere infant, just a child. So he didn't call himself an old man, because always he called himself a mere child. And there was a sense in which it was true, for with the new century there settled upon Chips a mellowness that gathered all his developing mannerisms and oft repeated jokes into a single harmony. और कहते हैं कि उसमें एक सेंस भी थी उनकी इस बात पे, क्योंकि वो एक इस एज में पहुंचने के बावजूद भी ना, उनके जो माइंड में थी ना, एक क्या कहते हैं, एक इनके हार्ट में थी, एक काइंडनेस सी थी, एक काइंडनेस शो होती थी. अब वो काइंडनेस उनके एक मैनरिज्म भी डिफरेंट थे, उनका डिफरेंट बिहेवियर्स भी था डिफरेंट स्टूडेंट्स के साथ, और ऑफन रिपीटेड जोक्स भी वो बहुत करते थे. तो इससे शो करता है कि वो ओल्ड एज बिल्कुल नहीं अपने आप को समझते थे, वो अभी भी अपने आप को बिल्कुल यंग समझते थे और एनर्जेटिक और एक्टिव समझते थे. No longer did he have those slight and occasional disciplinary troubles or feel diffident about his own work and all. और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्हें बहुत परेशानी हुई हो अपने क्या कहते हैं डिसिप्लिन से रिलेटेड, या अपने क्या कहते हैं वर्क से रिलेटेड, या अपने वर्क से रिलेटेड. And he was always proud of himself, about his work, about his worth, and he did not face problems about his work. He found that his pride in Brookfield reflected back, giving him cause for pride in himself and position. And basically, he thanked Brookfield that he reflected back the position he gave to Brookfield once when he was recruited in Brookfield. And this is a proud moment for Mr. Chips. It was a service that gave him freedom to be supremely and completely himself. He had, अब ये वो सर्विस है जिनकी वजह से उनको एक फ्रीडम मिला था और एक आज़ादी भी मिली थी, एक सिक्योरिटी मिल गई थी उन्हें, और वो अपने आप को बिल्कुल मुकम्मल कर चुके थे. दिस इज सर्विस है. ही हैड वन बाय सीनियोरिटी एंड राइटनेस. एंड जो वो कहते हैं सीनियर होते रहे, मेच्योर होते रहे, जो वो अपने इस टास्क में कामयाब होते रहे. An uncharted no man's land of privilege, and it was basically a journey from unknown to renowned. Basically, when he was recruited in Brookfield, no one remembered him. No one he was known by no one. Basically, he was unknown. But now he has acquired the right to those gentle eccentricities that so often attack schoolmaster and parson. But now he was as famous as the school masters and parsons who was attacked by every person. He wore his gown till it was almost too tattered. Now I am going to discuss about and I am going to chapter 9 of page 21. He wore his gown till it was almost tattered to hold together. Tattered means old and torn, मतलब कि completely क्या कहते हैं, फटे पुराने उनका जो गाउन हो गया था वो भी फट चुका था. And when he stood on the wooden bench by big hall steps to take call, and when he came for attendance in big hall steps, it was with an air of mystic abandonment to ritual. Basically, he didn't. Now he went to that age that he didn't strictly follow the rites and ceremony of the old rituals. He held the school list, a long sheet curling a board, and each boy as he passed spoke his own name for chips to verify and then tick off on the list. अब ये जब अटेंडेंस शीट अपने सामने रखते थे तो हर स्टूडेंट को बुलाते थे, उसके नाम से वो स्टूडेंट आता था, उनको स्टूडेंट को देखते थे, फिर उसकी वो अटेंडेंस मार्क करते थे.
That verifying glance was an easy and favorite subject of mimicry throughout the day और throughout the school, और हर कोई स्टूडेंट था ना वो उनकी इसी बात को मजाक उड़ाता था, ठीक है. Still rimmed and spectacles slipping down the nose, eyebrows lifted one a little higher than other. अब जिस तरह उनकी eyebrows का शिफ्टिंग होती थी, एक eyebrows लिफ्ट होती थी, दूसरी क्या कहते हैं स्लाइटली डाउन होती थी, वो सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका मजाक उड़ाते थे. A gaze half wrapped half quizzical, quizzical कहते हैं पजल्ड को, ठीक है, पजलिंग को. एंड ऑन विंडी डेज विद गाउन एंड वाइट, और जब कभी क्या कहते हैं बहुत तेज़ हवा चली थी, जब मतलब कि विंडी डेज होते थे. एंड स्कूल लिट फ्लटरिंग इन अनअप्रोप्रियस कन्फ्यूजन, अप्रोप्रियस कहते हैं डिसऑर्डर को, मतलब कि जो द स्कूल लिस्ट फ्लटर्ड इन अनअप्रोप्रियस कन्फ्यूजन, द होल थिंग बिकेम अ कॉमिक टर्न, कॉमिक कहते हैं फनी को. सैंडविच बिटवीन आफ्टरनून गेम्स एंड द रिटर्न टू क्लासेस,